the name of Lord Almighty. So you all are requested to cover your heads for the ardas. इस बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन को हम शुरू करेंगे भगवान के नाम के साथ. तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने हेड को कवर कर लीजिए. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. Recording in progress. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. Thank you to all of you. The team of teachers of our school, in collaboration with the parent fraternity, today will try to reach some very constructive decisions for the welfare of our children. Today, here, we all together will endeavor to pave a path for all our children so that their very difficult journey through class 12 goes with ease and with confidence. Today's initiative has been taken solely by our very special mentor, Shikha Gupta ma'am, who now is also the officiating principal of Shri Guru Nanak Public School. In light of the difficulties that were faced last year during the online classes by the students and by the parents, Shikha ma'am, vast experience as an educator, has devised certain strategies, parameters, and guidelines to help our children raise the benchmark of their performance in this session. So it is a big privilege for me to invite Shikha Gupta ma'am to enlighten all of us and begin today's session. Thank you so much, Nidhi. First and foremost, I would like to give a very warm greetings to all our parents, our students, and my dear staff members. Today, we all are there on this particular session to enlighten you how you are to prepare yourself for your CBSE. Children, for you, this class is very important. I would like to take you to the historical era of yours, 2019-20. 2019-20 में आप सभी बच्चे हमारे क्लास 10th में थे और आपको याद है आपके क्लास 10th के एग्जाम सभी ओवर हुए थे और लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था. आपने एग्जाम्स दे लिए थे और उसके बाद क्लास 10th के एग्जाम्स, माय डियर चिल्ड्रन, आपको पता है कैसे होते हैं. आपके पास 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, 80 मार्क्स का थ्योरी होता है और आपको कलेक्टिवली 80 + 20 होके पास होना होता है, विच इज नॉट अ टफ डील. उसके बाद आया हमारा नेक्स्ट ईयर
2020-21 जब आप सीनियर सेकेंडरी में लैंड करे, लेकिन सॉरी टू से लॉकडाउन हो गया था, कोरोना आ गया था और अल्टीमेटली आपका पूरा का पूरा सेशन ऑनलाइन ही चला। अब ऑनलाइन में 100 प्रॉब्लम्स होती हैं। स्टूडेंट्स, टीचर तो पढ़ा रही है, हमारी क्लासेस इफेक्टिव हो रही हैं, सब कुछ सिस्टम से हो रहा है, लेकिन जो आउटपुट हमें स्टूडेंट से मिलना चाहिए वो आउटपुट हमें कहीं ना कहीं नहीं मिला। If I talk to my teachers, if I talk to my dear children also who are watching us online, live आप हमें देख रहे हैं, बेटा लोग आप याद करिए जब हमारे एग्जाम्स होने वाले थे, फाइनल एग्जाम्स होने वाले थे और हमने बोला था कि एग्जाम्स ऑफलाइन होंगे, तो कितना ज्यादा रेजिस्टेंस आया था। स्टूडेंट से भी बहुत फियर था, ट्रॉमा था, क्या होगा अब हमारा। सारे साल तो हमने यहाँ से कॉपी किया, वहां से कॉपी किया, इधर से देखा, उधर से देखा, अब ऑफलाइन एग्जाम में हम कैसे अपने परफॉर्मेंस को देंगे, क्या हम कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे। यही प्रॉब्लम लेके बहुत सारे पेरेंट्स भी आए हमारे पास। शोभा आए थे ना जी? यस मैम। एग्जामिनेशन के हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स के रिक्वेस्ट आए कि मैम पूरे साल ऑनलाइन चला, अब आप ऑफलाइन ले रहे हैं, ये कैसे होगा, बच्चे तो घबराए हुए हैं। हमने कहा नथिंग टू वरी, आपके लिए ये जो 11th क्लास है ये तो एक ट्रायल रन है, रियल थिंग्स विल शो व्हेन यू लैंड अप इन क्लास 12। और अब आप आ गए हैं क्लास 12 में, सभी सक्सेसफुली पास हुए और अब आप क्लास 12 में हैं। क्लास 12 आपके लिए वापस नहीं आएगा और इस साल सीबीएसई बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड है। आप लोगों ने देखा लास्ट ईयर के बैच का सीबीएसई कैंसिल हुआ, हमारे को एक टैबुलेशन की पॉलिसी मिली, उस टैबुलेशन की पॉलिसी पे कुछ अनडिजर्विंग स्टूडेंट्स को हो सकता है बेनिफिट हो, लेकिन बहुतों को नुकसान भी होगा। तो सीबीएसई इस बार बहुत रेडी है, प्रिपेयर्ड है। आपके एग्जाम्स 100% होने ही होने हैं, होने ही होने, और इस बार तो दो होने हैं। एक आपका होगा नवंबर के मंथ में और एक आपका होगा मार्च के मंथ में, तो दोनों के लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए। अगर मैं काउंटडाउन देखूं, जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ओनली 3 months left and your first board begins, only 3 months left. So ये जो हमारा वेबिनार है आज, हमारे इस वेबिनार का फोकस टोटली है आपसे एक्सपेक्टेशंस, आपका एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा चलेगा। हमारी सिंसियरिटी में लैकिंग है, बच्चे रेगुलर ज्वाइन नहीं करते, इस एरिया पे हम फोकस करेंगे। प्रोजेक्ट्स आपको कैसे करने हैं, सारी चीजें टाइमली हो जाएं, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है आज के वेबिनार का। हम वो कहावत नहीं दोहराना चाहते, चिड़िया चुग गई खेत अब पछताए होत क्या। तो अभी हमें पछताना नहीं है चिल्ड्रेन, अभी हमारे पास एडिक्वेट टाइम है। आप सुनिए, हमारे पूरा जो स्टाफ है, 15 टीचर्स की टीम आपको क्या कहना चाह रही है। एंड वंस वी ऑल आर गोइंग टू मूव together in a collaborative form, see, we are going to bring good results. That is all for now from my side. Thank you, Nidhi. Thank you, ma'am. Thank you, Shikha ma'am, for beginning this session on a very nice and a motivating note. Examination is a very important aspect of a student's life. It becomes even more crucial if it is the unprecedented times like these, when we are sitting at home and everything has to be accomplished. And especially it becomes even more crucial if it is a class 12 board class. To guide us how the examination system, what kind of system the schools, the CBSE, we all are going to follow for our students, I invite our examination in charge, a very experienced teacher, Shobha Rana ma'am. Ma'am, please. Shobha Rana ma'am. Hello. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Ma'am. Good afternoon. As we all know,
Generally, for class 10 students, we have the result based on the examination conducted by CBSE at the end of the year. Normally, students think that because this is only the exam we have to prepare for, they never take any attention for any internal examination conducted by the school. So I am giving you the platform. I'm going to explain you the internal examination system which we are going to conduct this year and how much important this internal examination system for the students this year, especially when we are in a COVID situation. See, no doubt result will be on CBSE based, but for preparing the students overall, there are certain examination conducted by the school also. We are going to conduct for the class 12 student 3 small micro tests, 20 marks each, and then 2 pre-boards of 80 or 70 depending upon the weightage of the subject. Normally, the observation of the parents and students are, they are not going to be counted, so we are not going to pay attention, we will not prepare for it. Let me tell you, these internal exams are very important. Number one, they helps you in preparing the syllabus in parts. That will make a better learning. And moreover, as we all know, this year, CBSE has cancelled exams. And in this situation, the whole weightage is based on internal assessment, micro test, and pre-board. So parents and students, you have to take care that this internal assessment, if the same situation arises, we all know that same situation is we are facing this year also. Same internal assessment is going to be very important this year also. So parents, it's a request from our side that you have to make your child prepare for every micro test and pre-board as they are going to prepare for your board exam. For this, we have made some strategy also. Now, it's a mandatory from our side that every child is going to make one separate register for every subject in which he or she is going to write the answers, make the answer sheet, send it to PDF file, depending upon if it is going to be conducted online, preserve that answer sheet in the form of a register for the evidence which are going to be required at the end of the year by the CBSE. Hopefully, we are hoping that this micro test 1, which is going to be conducted next week only, is online, but we are trying that all the micro test and pre-boards we are going to have offline mode. But students, it's mandatory for you that you have to maintain all the records because CBSE is very strict about the evidences. For giving the assessment at the end, they are going to ask for the evidences. So this is our expectations from all the students and parents. You are going to help your your kids in this way. No doubt, because this year there was no planning from CBSE side, so the whole assessment is based on internal micro test and pre-board. But for next year, CBSE is quite ready and it has a plan, strategy, examination policy for 2021 and 22. Let me brief you about this new policy. And at the end, you will find that this new policy also has given weightage to internal assessment in the form of micro test and pre-board. So please, parents and students, normally it is observed students don't take these exams seriously. You have to take these exams very seriously because this is going to be counted in your overall result. So let me brief about the new policy which CBSE has issued yesterday only. This year, they have separated the whole session in 2 parts, term 1 and term 2. Accordingly, they have divided the syllabus also. 50% syllabus will be assessed in term 1 and 50% syllabus will be assessed in term 2. There will be 2 CBSE board exams this year. One in the month of December, and another will be in the month of March, April. First term exam in the month of November will be based on 90 minutes paper, entirely MCQ based. 50% syllabus will come. The study material, the blueprint, everything will come from CBSE side. So students have to prepare
for MCQ based paper. Now, if the situation allows, the CBSE will conduct this paper offline in the schools according to the centers given by CBSE. If not possible, then it will be in the online mode from the home only. Similarly, it says term 2 paper will be in the end March, April of 2 hours subjective paper. That will again have the two conditions, most probably offline mode. If not possible, it will be online mode. The students will attempt this paper from home only. The overall result will be based on term 1, term 2, which will be given by CBSE, question paper, everything will be decided by CBSE. The paper will be given by CBSE, uploading will be there, everything will be according to the CBSE, but CBSE has given the weightage for internal assessment also. And that will be based on micro tests, projects, and practicals conducted by the school. So my advice is, parents, term 1, term 2, if CBSE conduct, that will be in the hands of CBSE and preparation will be accordingly. But this internal assessment, which will be taken very lightly by the students, has to be taken seriously this year, because these marks will also make a difference in your overall result. So with this, I think I'm clear with the briefing of what is the new policy of examination given by CBSE. But our motto is that please, parents, take the internal assessment or these tests also very seriously, because they are also going to make a difference in the result of overall of the student. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you, Shobha ma'am. Thank you, Shobha ma'am, for understanding, for helping us understand the things in a wonderful way. Now, I would like to talk about discipline. Discipline is the key to success. We all know that. If learned at an early age, that is in the school life, it goes a long way, it stays with us forever and makes our life wonderful and meaningful. To help us understand further about the importance of discipline in life, I request my colleague, a hard task master, Kulmeet Kaur, to tell us more about the importance of discipline and the importance of regularity and punctuality in the online classes. Kulmeet ma'am, please. Hi, good morning, everyone. Good morning. Today I'm Kulmeet Kaur. Today I'm going to speak about the regularity and punctuality. As Shobha ma'am and Shikha ma'am, they have already covered so many points regarding the regularity and punctuality. It's very, very important कि रेगुलरिटी, अगर आप ये चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो लॉन्ग टर्म में, तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड इन योर लाइफ. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट ओनली अबाउट द 12th क्लास. आप ये सोचते हैं कि 12th क्लास है, 12th क्लास का रिजल्ट है, ठीक है हम पढ़ लेंगे, हम कर लेंगे. दिस इज नॉट अबाउट द 12th क्लास. दिस इज अबाउट योर लाइफ. ये आपकी लाइफ के बारे में है कि अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, रेगुलर हैं, तो आप तभी सक्सेसफुल होंगे. क्लासेस अटेंड करना एक और चीज है, आपको क्लासेस अटेंड करवाना इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए कि हमें खुद से क्लासेस अटेंड करनी है. आई हैव नोटिस्ड फ्यू थिंग्स अबाउट द क्लासेस कि बच्चे हैं वो सोचते हैं कि ये हॉलीडेज है, मतलब वर्क फ्रॉम होम है या हम स्टडी फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ये हॉलीडेज की तरह ट्रीट किया जाता है कि हम 9 बजे उठते हैं तो हम 9 बजे की क्लास ले लेते हैं, हम 10 बजे उठते हैं 10 बजे की ले लेते हैं. तो ये नहीं होना चाहिए. आपके स्कूल टाइमिंग्स वही है 7:45 से 2:40 तक, बीच में एक लॉन्ग ब्रेक है आपके लिए. जो क्लास आप 10 o'clock अटेंड करते हैं, क्लास आपको 8 o'clock भी अटेंड करनी है, आपको 2 o'clock भी अटेंड करनी है. अगर आप अपनी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे अटेंड नहीं करते हैं, दैट क्रिएट्स अ बैड इंप्रेशन ऑन द टीचर्स एंड इट विल अफेक्ट योर इंटरनल असेसमेंट ऑल्सो. ये सबको ये बात पता है कि अगर आप बीच में कोई भी क्लास मिस करते हैं तो आप वहां पे इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक में, और उसके आगे की जितनी भी क्लासेस होती हैं आपको उसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा. उसके बाद उस क्लास में आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा. देखो, डिसिप्लिन करना, हम आपको ये बोलें कि आप क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे तो हम आपको क्लास ग्रुप में से निकाल देंगे. That's a different thing. You are in 12th class, you all are mature students. We should expect self-discipline.
हम चाहते हैं कि आप खुद से ये बात सोचें कि आपको क्लासेस अटेंड करनी है। अटेंड करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप उसको लॉग इन करके बैठ जाएं। अटेंड करने का मतलब है यू शुड इंटरैक्ट विद योर टीचर्स। वी एज अ टीचर जब ऑफलाइन क्लासेस लेते थे स्कूल में, आप हमारे सामने बैठते हो, हम आपसे बात करते हैं, हमें आपसे बात करना अच्छा लगता है। यही जब ऑनलाइन क्लासेस है तो हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि हमें पार्टिसिपेंट लिस्ट में आपका नाम दिखे, वो उसके अलावा आप हमसे हमारे अपने डाउट्स पूछो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिर्फ लॉग इन करना इज नॉट सफिशिएंट, इंटरैक्ट करना टीचर्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय द टाइम सीबीएसई से क्या अपडेट्स आते हैं वो आपको क्लास में पता चलेंगे। क्लासेस अटेंड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कितने ऐसे डाउट्स होते हैं जो आपके माइंड में नहीं आते लेकिन आपके फ्रेंड्स के माइंड में आते हैं, वो डाउट्स टीचर से पूछते हैं, तो आपको नंबर ऑफ थिंग्स आप क्लास में अपनी क्लियर कर सकते हैं टीचर से। तो ये जरूरी मतलब इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ हम आपको हर बार ये बोलें कि नहीं हम आपके पेरेंट्स को कॉल करेंगे स्कूल में, अगर आप क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे हम आपको क्लास ग्रुप से निकाल देंगे। इससे बेटर है कि आप अपने अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन लेकर आइए कि आपको क्लासेस अटेंड करनी है, आपका रेगुलर स्कूल है, आपको 7:45 पर उठना है और उसके बाद 8 o'clock से लेके जो सीरियसनेस आपकी 8 o'clock की क्लास में या 10 o'clock की क्लास में है वही सीरियसनेस आपकी 2 o'clock की क्लास में भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है 2 o'clock तक आप सोचते हैं हम थक गए अब हम नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर इतना समझाने के बाद भी हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ता है तो वी आर नॉट हैप्पी विद दैट। आप क्लासेस अटेंड करिए, रेगुलरली अटेंड करिए अगर आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होना है। कि इट इज नॉट अबाउट द 12th क्लास रिजल्ट, बेसिकली आपका कंसेप्ट, आपका बेस इतना वीक हो जाएगा कि जब आप आगे हायर स्टडीज के लिए जाएंगे तो आपको वहां पर भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसके बाद आप जो भी करेंगे आपका बेस यहाँ 11th और 12th में बनता है। ठीक है 11th तो हो गई, वो तो कर ली हमने, बट 12th इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका करियर भी बनाता है और साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता है ताकि आप हायर स्टडीज में भी केपेबल हो सके। अदरवाइज सिर्फ 12th शॉर्ट टर्म सोच के मत चलिए अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म सोचिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। आई होप कि जितने स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं आप लोग रेगुलर क्लासेस में आएंगे और ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 या 3 क्लासेस में, 6 पीरियड्स आपके होते हैं, 6 पीरियड्स आपको अटेंड करने हैं। एंड रेगुलरली यू हैव टू मेंटेन योर रजिस्टर्स आल्सो, डू योर होमवर्क, सबमिट योर असाइनमेंट, आस्क योर डाउट्स। वी आर ऑलवेज रेडी फॉर यू, वी आर ऑलवेज अवेलेबल कि आप कभी हमें व्हाट्सएप पे डाउट्स भेजें, हर टीचर आपके सॉल्व करती है। बस ये है कि यू हैव टू बी रेगुलर, यू हैव टू बी पंक्चुअल। थैंक यू सो मच। Thank you very much, Kulmeet Kaur ma'am. Projects and practicals are the essential part of our examination system and the assessment. In continuation with the examination policy as it has been explained by our examination in charge ma'am, Shobha ma'am, our PGT Physics Deepika Kurar ma'am will now elaborate on the system of making and submission of the projects and the preparedness of the students for their practicals, which are very important. So I request Deepika Kurar ma'am to carry forward the proceedings. Deepika ma'am. Thank you, and a very, very good afternoon to all of you who all are attending this and my colleagues as well. So today I am here to give you a brief idea that how the school authorities go about the practicals or the projects in class 12. So let me put, Narina ma'am, please put it on the spot. So Yes. This is how we would go. First of all, I need to tell you about the weightage of your projects or the practicals in the various subjects. So you all are knowing that we have 2 streams in our school, and one is the commerce stream and the another is the science stream. So in commerce, the 100 marks are divided into 80 and 20. 80 marks for some subjects, I'm saying. For some subjects, the theory exam would be of 80 marks and 20 marks are allotted to the project files or the practical work. So let's start with business studies.
First, we are covering the commerce subjects, and then we will be covering the science subjects, and then we would be covering those subjects which are common for commerce and science. So business studies, accountancy, economics. These three subjects, they are having a weightage of 20 marks for their projects. So majority of the teachers, they must have told the students about the topics of the project and how would they go about it, and the students, they have been asked to to do the research work and jot down the points for their project files, and they're always welcome to discuss the problems which they are facing while preparing their projects, and they would be helped very minutely by all the subject teachers. In these 20 marks, they would be having their practical exams. This 20 marks is not the entire marks for the project. They would be having their viva also. Right now, we don't know that how the CBSE would go for the practicals. Like, you must be knowing that earlier the CBSE cancelled the practicals, but now in the later part of the year, in the June, we conducted again the practical, and that was online. So how we would go for the practicals, that is a different thing. But as Shobha ma'am said, as Kulmeet ma'am said, that you have to be ready with your documents. So project file for these subjects, it is very, very important. And how you would submit it, I would cover that part later on. So the 20 marks is for the project file. The 20 marks is for the project as well as the practical. Both the things are clubbed. So these three subjects, 20 marks, 20 marks, 20 marks. Then comes physical education. It is a common subject which is there in commerce also and which is there in science also. In science, all the students, they have the physical education subject. But in commerce, the some students, they have physical education, some students, they have Punjabi as their subject. But those students who have opted for physical education, again, 30 marks is for their practical. Now, when I say that 30 marks is for practical, I would be saying it combined for physical education, physics, chemistry, bio, CS, and IP. With IP is there in commerce. So in these 4 subjects, how these 30 marks are divided, it is not entirely for their project files. It is for their project work, it is for their practicals, and the viva, and so on. So how the things would go, the students, for example, in physics and in physical education, earlier in physics, we used to have projects, but last year, project was deleted from physics. Right now, as a physics teacher, I'm saying that right now, I'm not covering the project portion of the physics. I'm assuming that this year also, project won't be there in physics, but all these things, whatever I'm saying, they are subject to change as per the CBSE notifications. For now, in physical education and physics, these 2 subjects, they won't be having the projects. So how these 30 marks would go? These 30 marks are there for their practical files and their viva, and how the students would go in their practicals. Right now, in many of the subjects, we have not started with the practicals. The simple reason being, we are waiting that what all practicals are there and what all practicals are not there. For example, last year there used to be 15 experiments, but in the due course of time, when all the students, they prepared their practical files, 7 experiments were deleted. So everything would be clear by this July, and if it won't be clear, then also we would be starting with whatever we did in the last session. These 2 subjects, they are not having projects for now. For now, 30 marks are for their practical files and their practicals, which would be conducted online for now. Now comes chemistry, bio, computer science, information practice. These subjects are 1, 2, 3, 4. 4 subjects. The 30 marks would be divided into their project files, their practical files, and their practicals. In practicals means the viva and the scheme of the practical exam. So again, if the projects are there, then the students, they must have been informed about the project topics,
If not, then again, they would be told about the project topics in a very short, maybe in the coming week. And then practicals, all the practicals now in these subjects, in physics, chemistry, bio, CS and IP. CS and IP, the computer teacher, they conduct practicals simultaneously because it's a part of the theory and the practical. They are clubbed in a way that they cannot be bifurcated. So you all must be doing practicals in CS and IP. But yes, in these subjects, we would be starting with the practicals on Ola Labs for now. Like in 11th, since we know that we can do a little bit of experiment in class 11th, we have already started with the experiments in class 11th. And we would be starting with class 12 as soon as the final list of the practical, it comes out by the CBSE. Now, the subject which is left behind and which is common again for both commerce and science is mathematics. 20 marks is there, again for the commerce students also and for the science students also. And I had a talk with your mathematics teachers also, and she has already given you the project topics and on what topics you have to prepare the projects. So this is all about the marking scheme and the weightage which have been given to the practicals or the projects. Now, how would we go about it in the session? Till the time the school gets reopened, what you would be asked to do? You would be asked to, in the practical subjects, you would be asked to maintain a record of your practical files. Whatever experiment we would be covering online, you would be recording the practicals. You would be guided by the teacher that what all you have to write, and you would be maintaining a record of all those practicals. If it's a practical in which the calculations are required, the readings are required, right now, we would be advising you to write all the observations with pencils, so that as in the last session, when the school got reopened in December and January, all the students, they did their practicals themselves, because I know that doing a thing online and offline, yes, it's a huge difference. So we would be hoping, and as Shobha ma'am said, that we would be trying that you would be having the subsequent micros and the pre-boards offline. So we would be planning out something also that maybe we get a chance to call you on a regular basis for the practicals or the projects. So whatever files you would be making, जो भी आप files बनाओगे, चाहे वो practical file हो या वो project file हो, हम उनकी PDF आप लोगों से demand करेंगे for our records. अगर ये भी worst scenario में हम बोल रहे हैं, if the school does not get open और हमारे पास कुछ records हो आपका, so you would be making a PDF and you would be uploading it on the Google Classrooms, or you would be mailing it to your teachers. But please, it's a request that जैसे जैसे आपके teachers आपको practicals करवाएंगे या आपको projects के लिए बोलेंगे, don't linger it on, side by side करना. Because yesterday only, and many of the students, they started messaging me that ma'am, now we would be having exams twice a year, board 1 and board 2. So you all are better aware than us. So maybe one night CBSE announces that you have to submit so and so practical record, practical of the projects, maybe वो भी divide हो जाए 2 terms में. You never know. So इसलिए आप लोगों को अपना record maintain करना है. हम ऐसे मान के चलेंगे कि क्या पता ऑनलाइन ही रहे, तो practicals, projects, everything would be going along with your theory. And please उनको उतना ही importance देना जितना आप लोग अपनी theory को दो. Maintain separate files for the practical subjects and start working on your projects. Your teachers are always there to guide you and help. So that would be all from my side. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much, Deepika ma'am. One slight thing I would like to add up here is the I think English. In English also we are going to have ASL of 20 marks, just like as we have in mathematics, but everything is very dicey, very wavering. We do not know what happens, so we are still waiting for the guidelines from the CBSE. Nidhi, you can add Punjabi also. You can add Punjabi to it. Yes. Punjabi also has an ASL component. Definitely. I think for 30 marks, Punjabi ma'am can tell us better. Only 20. Only 20 marks.
Only 20. Acha, because it is a language, so yes, just like English, the internal assessment would have the weightage of 20 marks in Punjabi and in English. These are the two languages. That's why. So very well explained by Deepika Kurar, ma'am. Okay, now education has to be a continuous process, and regular home assignments make education continuous and more fruitful if these things are taken very seriously by the students. We learned about the projects, we learned about the examination policy, we learned about the importance of practicals, internal assessment. Similarly, we must understand the significance of home assignments. For this, I invite my colleague, PGT Biology, Harleen Kaur ma'am. Ma'am, please guide us. Harleen ma'am. Yeah, thank you, Nidhi ma'am, for inviting me on this platform. First of all, I would like to greet everyone a very good afternoon to all my colleagues and all my students who are watching this stream. So I'm going to speak about the importance of homework and how you are going to submit the homework in this virtual and pandemic times. Okay, so we are going to understand about this. So I have just prepared a small PPT so that the things are in front of us. So homework submission, as Shobha ma'am has also told, because we have a reforms in examination system. So earlier we used to give very light weightage like homeworks ऐसे ही है, time wastage है. But now, because we are not knowing that maybe these homeworks, because CBSE has become so uncertain, so unpredictable. किसी दिन भी रात को एक circular आ जाता है कि homework assignments के भी marks हैं. तो अब आप क्या करेंगे? You cannot produce the entire साल का पूरा homework at once. तो इसीलिए आप सबसे एडवाइस है कि अपना होमवर्क भी अप टू डेट रखिए, जैसे आप फाइल्स रखते हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता कि होमवर्क की भी नोटबुक्स वो चेक कर लें. ठीक है, तो होमवर्क एक्चुअली में होता क्या है, होमवर्क कैसे अपलोड करते हैं अभी आपको मैं बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हो सकता है होमवर्क हम कुछ और समझते आए और कुछ और है. तो एज अ बायोलॉजी टीचर पहले तो मैं आपको बता दूं होमवर्क क्या है. एक लिंक होता है होमवर्क एकेडमिक अचीवमेंट्स के बीच में. ठीक है, होमवर्क आपको बताता है कि कैसे आप टाइमली अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट बनाता है और आपको मेमोरी और क्रिटिकल थिंकिंग आपकी इंक्रीज करता है. लेकिन हम हमेशा से होमवर्क को क्या समझते आए हैं, एक स्ट्रेस. हमें लगता है होमवर्क एक टेंशन है, एक स्ट्रेस है. सिर्फ हम ही नहीं, एज अ स्टूडेंट नहीं, इवन द पेरेंट्स ऑल्सो थिंक दैट होमवर्क इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम. सबको ऐसा लगता है कि होमवर्क एक टाइम वेस्टेज है. लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत सारे रिसर्च और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने ये प्रूव कर दिया है कि होमवर्क जो है एक ब्लेसिंग है, एक एडवांटेज है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टूडेंट लाइफ के अंदर. तो मैं बहुत जल्दी से थोड़ी से होमवर्क के आपको इंपॉर्टेंस बताऊंगी और आई होप, मुझे यकीन है कि एंड ऑफ द सेशन में आप सबको लगेगा कि हाँ जी, होमवर्क टाइम वेस्टेज नहीं था, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, हमने तो इसको मिस कर दिया. देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं होमवर्क क्या करता है बायोलॉजिकली. अगर हम देखें, हमारी मेमोरी को शार्पन करता है. कैसे? आपने क्लास में आज जो भी सीखा, अगर आप घर जाकर उसको रिवाइज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ होमवर्क्स. नाउ यू विल थिंक कि व्हाई इन द फॉर्म ऑफ होमवर्क्स. क्यों? क्योंकि हम लोग ना क्या है कि हम एक ऐसी, हमारी सिस्टम ऐसे हो चुकी है, जब तक हम पे कुछ इम्पोज नहीं किया जाता हम कुछ करते ही नहीं है. जैसे हम कहते हैं ना, रॉकेट के नीचे आग लगाओ तभी रॉकेट उड़ता है. तो मुझे लगता है कि हमको भी कुछ देना पड़ता है, असाइन करना पड़ता है, उसके बिना हम काम ही नहीं करते. तो होमवर्क तो एक तो हमारी इम्प्रूव करता है मेमोरी को और हमको सिखाता है कि हाउ टू यूज द टाइम इन अ जुडिशियस वे. ठीक है, ये हमें दूर रखता है बहुत सारी एक्टिविटीज. जैसे आजकल पैंडेमिक टाइम्स में सभी पेरेंट्स परेशान है कि बच्चे सारा दिन फोन पे लगे रहते हैं, वीडियोस पे लगे रहते हैं, टेलीविजन पे लगे रहते हैं. लेकिन अगर हम उनको होमवर्क दे देंगे और उनको पता है कि दे हैव टू सबमिट द टाइम होमवर्क ऑन द टाइम, तो वो ये इन सारी चीजों से दूर भी रहेंगे. और मुझे लगता है कि आप देखिए, होमवर्क जो है हमें बहुत इंडिपेंडेंट बनाता है. बिकॉज आफ्टर going from the school, after attending your online classes, if you are able to do your homework independently, वो जो confidence आपके अंदर आता है, वो जो खुशी आपके अंदर आती है, I think वो आप लोग ही बता सकते हैं कितने independent आप feel करते हैं जब आप क्लास में जो पढ़ाया उसी को दोबारा कर पाते हैं खुद से, without any help. So आपके अंदर confidence और self reliance की feeling develop करता है. होमवर्क करने से हमारे अंदर एक sense of responsibility आती है, सिर्फ एज अ स्टूडेंट नहीं, लेकिन लाइफ में हमें एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना कितना इंपॉर्टेंट है. और ये सारी चीजें जो हम स्कूल टाइम में सीखते हैं ना बेटा, ये सिर्फ ये नहीं है कि हमें मार्क्स लेने हैं या हम पढ़ाई करते हैं. कितनी बारी मैंने आपको क्लास में भी बोला है, पढ़ाई सिर्फ नंबर के लिए मत करिए, पढ़ाई कीजिए नॉलेज के लिए. अपना ब्रेन बैंक, अपना नॉलेज बैंक भरते रहिए. इट्स नॉट जस्ट अ खेल ऑफ नंबर. ठीक है, वो कहते हैं ना,
नंबर इज लाइक पैसा आता जाता रहता है, लेकिन ये जो नॉलेज है आपकी लाइफ टाइम ग्रूमिंग करती है, ठीक है। और देखिए होमवर्क आपको नेक्स्ट डे की क्लास के लिए कैसे प्रिपेयर करता है, ये बिल्कुल वैसा ही है अगर आप किसी शादी पे जा रहे हैं और आपने कुछ डिसाइड ही नहीं किया क्या कपड़े पहनने हैं और क्या ज्वेलरी पहननी है, तो आप जा सकते हैं नहीं ना। तो ऐसे ही जब आप होमवर्क करते हैं तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तो आप प्रिपेयर होते ही हैं और साथ में आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो जाती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम इतने सालों से पढ़ रहे हैं किस लिए, नंबर के लिए, मार्क्स के लिए। तो अल्टीमेटली होमवर्क्स आपको थोड़ा सा, आप मटेरियलिस्टिक हैं तो आप ये सोचिए कि होमवर्क करने से आपकी एग्जाम्स की तैयारी कितनी होती, क्योंकि होमवर्क आपको रेगुलर गाइडेंस देता रहता है। सो इससे होमवर्क करने से योर स्टडी, सेल्फ स्टडी, यू आर डूइंग द सेल्फ स्टडी एंड यू आर क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स एंड दिस मेक यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास एंड ऑल्सो फॉर द कमिंग एग्जाम्स। और देखिए होमवर्क हमें सिखाता है कि कैसे हम किसी भी टाइम में अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज करें। कभी कभी हमारी टीचर्स हमको ऐसे होमवर्क्स देती हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, तो उसके लिए आपको सर्च करना पड़ता है एंड दिस वे यू बिकम इंक्यूजिटिव। आपको ये पता चल जाता है कि कैसे लाइफ में प्रॉब्लम्स को टैकल करना है। आप अपनी लाइब्रेरीज को, अपने इंटरनेट को, अपने पेरेंट्स की हेल्प लेते हैं और आप सारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो हमारा बॉक्स होता है वो खुलता है, I mean, जो हमारा नॉलेज का बैंक है वो बढ़ता है, क्योंकि हम होमवर्क को कभी कभी करने के लिए अपने सब्जेक्ट को बहुत एक्सप्लोर करते हैं और इससे हम अपने सब्जेक्ट को एक बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं और हम उसे समझ पाते हैं। उसके बाद बहुत सारे होमवर्क्स ऐसे होते हैं, जैसे बचपन में मुझे याद है जब भी हमें हॉलीडेज होमवर्क मिला करता था, कभी ऐसा होमवर्क मिला करता था कि यू हैव टू गो टू सी शोर टू कलेक्ट द सेल्स और यू हैव टू कलेक्ट द लीव्स, और हमारे पेरेंट्स हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाते थे। तो आई थिंक कितना मजा आता था व्हेन योर पेरेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्वड इन योर होमवर्क। और पेरेंट्स को भी जब वो होमवर्क्स देखते हैं तो पेरेंट्स को भी पता चलता है कि व्हाट इज गोइंग इन द क्लास, ठीक है, व्हाट द चाइल्ड इज लर्निंग एंड हाउ द चाइल्ड इज इन्वॉल्वड इन द स्टडीज। सो आई थिंक होमवर्क जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इज जस्ट नॉट अ स्ट्रेस बट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और साथ में देखिए होमवर्क से आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, जैसे मैंने शुरू में ही बोला है, होमवर्क करते रहेंगे, आप रेगुलर लेंगे, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस और अल्टीमेटली आपके स्कोर्स एकेडमिक्स में देखो कितने ज्यादा हाई होंगे, क्योंकि इससे आपको एक स्टेबिलिटी मिलती रहती है, एक पोटेंशियल आपका डेवलप होता रहता है और इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक रहता है, बिकॉज व्हेन यू आर इन्वॉल्व डूइंग समथिंग देन यू डोंट लूज योर कॉन्सेंट्रेशन, यू कैन फाइंड अ गुड प्लेस एट योर होम। अभी पैंडेमिक टाइम्स हैं, आप खुद एक अच्छी सी जगह ढूंढ लीजिए जहां शोर ना हो और अपने होमवर्क पे फोकस कीजिए एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डेवलप द कंसंट्रेशन स्किल्स आल्सो, जो कि आजकल के टाइम पे बड़ा मुश्किल है। हम मेडिटेशन करने भी बैठते हैं, हम नहीं कर पाते, लेकिन होमवर्क करेंगे आप तो आपका डेफिनेटली कंसंट्रेशन जो है आप कर पाएंगे और इससे बहुत सारे लाइफ स्किल्स डेवलप होते हैं। जब आप होमवर्क, कोई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जिसमें कोई प्रॉब्लम छुपी रहती है, तो हम अपने लाइफ के अंदर वी लर्न हाउ टू टैकल एवरी प्रॉब्लम एंड इवन वी कैन मैनेज टू कंप्लीट द असाइनमेंट्स ऑन टाइम, देन वी आर डेवलपिंग द टाइम मैनेजमेंट स्किल ऑल्सो। We know that there is a particular deadline and we are completing, because बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, आपने देखा होगा, हमेशा ही होमवर्क लेट सबमिट करते हैं। तो वो वाली जो आदत होती है ना, वो स्कूल टाइम से ही डेवलप होती है, जब आप कहीं जॉब्स भी करते हैं और आपको हर चीज लेट 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 करने की आदत हो जाती है। ऐसे पेरेंट्स, ऐसे बच्चे जो पेरेंट्स बनते हैं, उनके बच्चे भी लेट पहुंचते हैं स्कूल, उनके बच्चे भी होमवर्क लेट सबमिट करते हैं, क्योंकि उनको आदत हो जाती है। ये चीजें जो है ना, धीरे 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 हम इसके साथ ग्रो करते हैं और ये हमेशा परमानेंट हो जाती है। जैसे आपने कभी देखा होगा, फ्लोर बन रहा होता है, सीमेंट कच्चा होता है, तो सब कहते हैं उस पर मत चलो, निशान पड़ जाएंगे, लेकिन जब एक बार वो पक जाता है, उसके ऊपर चाहे ट्रक चले चाहे हाथी चले, कुछ नहीं होता। तो ऐसे ही जिस दिन जो क्लास में हुआ है, उसी दिन जाकर हमने उसका होमवर्क कर लिया, उस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, अपने एंड पे कर लिया, तो वो चीजें परमानेंट हो जाती हैं, ठीक है, वो चीजें फिक्स हो जाती हैं। और बहुत दिनों के बाद जब उठाएंगे तो फिर वही बात है, हाथी चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो इसीलिए होमवर्क सिर्फ एक लायबिलिटी नहीं है, ये पार्ट ऑफ योर स्टडीज है, इसको इतना लाइटली मत लीजिए। ये सारी चीजें, ये सारा रिसर्च वर्क है, ये कोई हवा की बातें नहीं है। आई एम नॉट गिविंग अ लेक्चर, दिस इज ऑल बीइंग प्रूव्ड बाय रिसर्च। तो इसीलिए इसको मानिए और इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए, टाइम टू टाइम होमवर्क सबमिट कीजिए, ठीक है। आई होप इतना कुछ होमवर्क के बारे में जानने के बाद यू आर कन्विंस्ड दैट यस वी नीड टू सबमिट द होमवर्क्स ऑन टाइम। अब फाइनली आपको मैं बता रही हूँ कि होमवर्क को सबमिट कैसे करना है। दिस थिंग प्रोफाइल आई हैव मेड आफ्टर टॉकिंग टू ऑल माय कोलीग्स, ऑल द सब्जेक्ट टीचर्स, वी हैव फाइनली मिलकर हमने डिसाइड किया कि इस तरीके से हम आपसे होमवर्क कलेक्ट करेंगे।
स्टेप नंबर 1 क्या है कि एवरी स्टूडेंट इज सपोज टू मेंटेन वन सेपरेट नोटबुक फॉर ईच सब्जेक्ट. सो इफ यू आर हैविंग 6 सब्जेक्ट्स, 6 रजिस्टर्स ले आइए और सबके ऊपर सब्जेक्ट नेम लिख दीजिए. Then the student will complete the given assignment assigned by the subject teacher in the notebook. This depends कि सब्जेक्ट टीचर कैसे होमवर्क देना चाहती है. अगर मैथ्स की टीचर रोज देना चाहती है या लाइक सम टीचर्स दे गिव आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ चैप्टर. सो इट डिपेंड्स फ्रॉम टीचर टू टीचर. तो आपको अपना होमवर्क उस रजिस्टर में कंप्लीट करना है. जैसे मैम ने बताया कि हमको एक टेस्ट रजिस्टर बनाना है, वैसे ही हमें अपना असाइनमेंट रजिस्टर भी बनाना है. ओके. थर्ड स्टेप क्या है, आप शुरू में जब आप रजिस्टर बाय करें तो आप हर पेज के ऊपर अपना नेम और अपना रोल नंबर लिख लें. ठीक है, हर पेज के ऊपर अपनी स्टैंप लगा लीजिए नेम रोल नंबर की और उसमें अपना होमवर्क करते जाइए. जैसे ही होमवर्क सबमिशन का टाइम आता है आप उसकी पीडीएफ बनाइए. थर्ड स्टेप है, यू हैव टू राइट योर नेम एंड रोल नंबर ऑन द टॉप ऑफ ईच पेज. देन मेक द पीडीएफ ऑफ द होमवर्क विच इज असाइंड. फिफ्थ स्टेप इज अपलोड दैट वर्क ऑन द गूगल क्लासरूम. अभी तक मेरे ख्याल से सभी ने अपनी गूगल क्लासरूम्स बना ली हैं, सब बच्चों ने गूगल क्लासरूम्स ज्वाइन कर ली हैं. अगर नहीं करी, मे बी सम टीचर्स दे वांट इट ऑन देयर मेल. सो इट डिपेंड्स कि टीचर कैसे चाहती हैं, बट आई थिंक एवरीवन हैज एग्रीड टू सेंड द होमवर्क ऑन द गूगल क्लासरूम. तो गूगल क्लासरूम पे आप वो होमवर्क जो है वो सेंड करेंगे. और ये ऐसे ही नहीं है बेटा, गूगल क्लासरूम एक परमानेंट रिकॉर्ड है. आपके सारे रिकॉर्ड्स हम सेव कर रहे हैं ड्राइव पे, सब कुछ सेव्ड रह रहा है हमारे पास. और फाइनली वेरी इंपॉर्टेंट नोट, किसी भी दिन फिजिकल चेकिंग ऑफ द नोटबुक्स कैन बी डन ऑन एनी कंड्यूसिव डे. जैसे ही कंडीशंस बेटर होती हैं, और आपको पता है कभी भी कंडीशन बेटर हो जाती है ना. आज रात को भी फोन आ सकता है कि कल कंडीशन बेटर है, तो आपको आना हो सकता है. ठीक है, सो फिजिकल चेकिंग कैन बी डन फॉर द नोटबुक्स ऑन एनी डे. यू कैन कॉल एंड चेकिंग करवाने के बाद ये नहीं है एरोप्लेन बना के उड़ा दिया उसका. यू हैव टू कीप योर नोटबुक सेफ for the final internal assessment, because ये notebooks भी evidences हो सकती हैं. अभी आपने थोड़े दिनों पहले एक सर्कुलर देखा था सीबीएसई का कि अटेंडेंस जिनकी नहीं है उन बच्चों को फेल किया जा सकता है. ठीक है, तो हम उनको दिखा सकते हैं कि एविडेंसेस देखो बच्चे ने पूरे साल क्लासेस अटेंड किए हैं, पूरा होमवर्क क्लास वर्क नोटबुक मेंटेन हुई है. तो पहले भी जब हमारे पास सीसी सिस्टम होता था तो हम ये एविडेंसेस सेंड किया करते थे. यस मैम, वी यूज्ड टू सेंड ऑल दीज, कीप दीज ऑल असेसमेंट्स, files, notebooks, homework assessments. So similarly, these can be asked as a evidence of internal assessment also. So I think this is enough. I would like to extend my thanks to our team SG and PS कि ये pandemic times में भी हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे होकर बच्चों के लिए preparedness for class 12th coming year दे रहे हैं. So with this, I would like to end. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you. I really appreciate the way in which Harleen Kaur ma'am has described us the significance of doing and submission of the assignments and many other things, many wise things she has told us. Thank you very much for that. Moving on further, I would like to say that stress, fear, rush, uncertainty, worry, and disease. These are the words that describe our life today. Right. Maintaining sound mental and emotional and physical health. And this is the need of the hour. For this, I request our physical education teacher, PGT Physical Education, my colleague Sushma Dhawan ma'am, to help us guide how to do that, how to be fit and be prepared to face and conquer all the challenges in our life. Sushma ma'am. Good afternoon everyone. Very good afternoon. अभी हमारी सभी टीचर्स ने आपको गाइड किया कि कैसे होमवर्क करना है और कैसे आपको जो है अपना वर्क सबमिशन करना है, एग्जामिनेशन के लिए रेडी रहना है. तो इस सब के लिए जो है हमें फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर हम फिट होंगे तभी हम जो है कोई भी टास्क जो है परफॉर्म कर पाएंगे. तो उसके लिए मैं पहले शिखा मैम को थैंक्स करना चाहूंगी. उन्होंने ये टीम प्रिपेयर की कि सब एक किसी ना किसी सब्जेक्ट को लेके सभी टीचर्स जो है अपने अपने व्यूज शेयर करें. तो सभी ने अपने यहाँ व्यूज शेयर किए. अब मैं बच्चों को गाइड करना चाहूंगी और पेरेंट्स भी बच्चों को, अगर आपके बच्चे कुछ प्रॉब्लम आपको बताते हैं फिजिकली उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आज मैं जो पॉइंट्स बता रही हूँ, जो मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ, तो आप अपने बच्चों को गाइड करके जो है अपने बच्चे को रिलैक्स कर सकते हैं. तो फर्स्ट हमारा कुलमीत में आपने बताया था कि आप 8 o'clock जो है स्टार्ट हो जाइए रेडी.
और अगर टायर्ड फील करते हैं तो उसके लिए मैं आपको टिप्स दूंगी थोड़े से। अगर टायर्ड आप फील कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप है हमारा मेंटल, अगर किसी को टायर्डनेस होती है, स्ट्रेस होता है, तो उसके लिए जो है हम यहाँ पर हमारी टेम्पल बोन होती है, यहाँ पर आप फील करोगे एक गड्ढा है, तो ये 2 फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर और आपकी मिडल फिंगर दोनों फिक्स करके हम रोटेशन कर सकते हैं 5 टाइम, आईज क्लोज करके 5 टाइम फॉरवर्ड एंड 5 टाइम बैकवर्ड। इट विल रिलैक्स योर ब्रेन। फर्स्ट जो है आपकी ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए मैंने एक्सरसाइज बताई, तो आप इसके 5 से ज्यादा भी रोटेशंस कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कितना टायर्ड फील कर रहे हो। आईज क्लोज करके आप इसको कर सकते हो। उसके बाद सेकंड हमारा आता है आईज। आईज पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है, कई बच्चों को लैपटॉप वगैरह यूज करने में, मोबाइल यूज करने में जो है प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उसके लिए इमीडिएटली हम 20 मिनट्स का ब्रेक देते हैं। हमारा जो डेली का पीरियड्स का बीच में गैप है, हर पीरियड के बाद जो 20 मिनट्स का गैप है, उस पर ये बच्चे जिसको जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। आप अपनी आईज को जाके स्प्लैश कीजिए, पानी से धोइए, आईज ब्लिंक करिए, क्लोज ओपन 50 टाइम 20 टाइम, जितनी देर में आप रिलैक्स हो जाए। तो आईज के आपको 2 एक्सरसाइज मैंने बताई। उसके बाद हम नेक पे आ जाएंगे। मैं पूरे बॉडी पार्ट्स को कवर करूंगी जितने भी हमारे सिटिंग में इन्वॉल्व होते हैं या हमारी एक्टिविटी जो भी हम लर्न कर रहे हैं या सब्जेक्ट हम जो भी पढ़ रहे हैं, करते समय लैपटॉप पे बैठते समय में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो नेक्स्ट हमारा नेक है, नेक को हम बेंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसकी रोटेशंस है नेक की हमारी, स्लोली आप रोटेट कर सकते हैं बोथ साइड, लेफ्ट टू राइट एंड देन राइट टू लेफ्ट। फॉरवर्ड बेंडिंग, ये हम नेक को रिलैक्स कर सकते हैं। देन मैं आऊंगी शोल्डर पे। शोल्डर के लिए हम जो है पूरा रिलैक्स करने के लिए शोल्डर को भी रिलैक्स कर सकते हैं। फॉरवर्ड आपकी रोटेशन, देन बैकवर्ड रोटेशन। फिर उसके बाद पूरा इसको इजी, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे शोल्डर। इससे बिल्कुल इमीडिएटली आपको रिलीफ मिलेगा। लेफ्ट एंड डाउन, लेफ्ट एंड डाउन, ऊपर उठाइए, बिल्कुल लूज, नीचे छोड़ दीजिए, उठाइए, लूज एकदम छोड़ दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स करते हुए अगर आप छोड़ दोगे तो आपके शोल्डर्स जो है रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद हम आएंगे अपने रिस्ट पे। रिस्ट के लिए हम जो है रिस्ट रोटेशंस है, इसमें आप बोथ साइड जो है रोटेट कर सकते हो। देन फिंगर्स की एक्सरसाइज है। फिंगर को हम ऐसे रखेंगे, इसको प्रेस करते हुए इन देन आउट, इन आउट, इसको हम करेंगे। फिर प्रेसिंग है इसकी हमारी फिंगर्स की, बोथ साइड लेफ्ट एंड राइट। टिप्स को आपने प्रेस करना है, इससे हमारे जो फिंगर टिप्स में जो पेन हो रहा है उससे इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। टाइट करके बिल्कुल क्लोज करनी है आपने फिंगर्स, देन ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन। देन हम आ जाएंगे अपनी वेस्ट पे। कमर की एक्सरसाइज। कमर के लिए जो है हम अपर, हमारी अगर वो उसमें बैक में पेन हो रहा है तो उसके लिए हम पवन मुक्त आसन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। आपने लेट के जो है स्पाइन पोजीशन में लेग्स को फोल्ड करना है और लेग को चेस्ट पे लाके आप नीज को होल्ड करेंगे। ये हमारा पवन मुक्त आसन होता है। इससे हमारी बैक को जो है फुल बैक को रिलैक्स मिलता है। अगर किसी को लोअर बैक में पेन हो रहा है तो लोअर बैक के लिए जो है हम अर्ध चक्र आसन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे, इसमें हैंड्स जो है वेस्ट पर आकर हम बैक पे बेंड हो जाएंगे। ये सिंपल आसन जो है मैं आपको बता रही हूँ, सभी परफॉर्म कर सकते हैं, इवन पेरेंट्स भी कर सकते हैं। इसको करने में आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और वो सब रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए सिंपल से 2 आसन मैंने आपके लिए जो है सेलेक्ट किए जो हमारी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी लोअर बॉडी। लोअर बॉडी के लिए जो है हम लेट के साइकिलिंग परफॉर्म करें। साइकिलिंग करने से आपके नीज, फुल लेग्स और आपके टोज, एंकल्स, पूरा लोअर बॉडी जो है रिलैक्स हो जाती है। साइकिलिंग में भी पहले आपने फॉरवर्ड साइकिलिंग करनी है, देन रिवर्स ऑर्डर में। अगर मैंने 10 टाइम फॉरवर्ड किया है तो 10 टाइम ही मैं रिवर्स मोड में भी परफॉर्म करूंगी। और इसके अलावा मैं अभी मैम ने बताया कि मेडिटेशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। होमवर्क मिला है, आपको क्लास में कुछ समझ नहीं आया या आपको क्लास में नहीं आ रहा समझ, तो आप वज्र आसन में बैठ के आप क्लास अटेंड करिए। वज्र आसन में बैठते हैं तो हमारा ब्रेन जो है एक्टिवेट हो जाता है। जितनी नर्व्स है हमारी, नर्व सबको पता है हमारे ब्रेन से जो है पूरी स्पाइन से पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। जब आपका बैकबोन एक्टिव हो जाती है, जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो
फुल बॉडी जो आपकी अटेंटिव हो जाएगी, जो आपकी टीचर आपको गाइड कर रही हैं, जो भी आपका चैप्टर है वो इजी हो जाएगा. इवन लर्निंग प्रोसेस भी हमारा जो है वज्रासन में बैठ के आप कर सकते हो. जो आपको टफ लग रहा है, लर्न नहीं हो रहा, तो आप उसमें बैठिए वज्रासन में और लर्न करिए, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा. और ओम की चैंटिंग से हमारी मेडिटेशन होती है, उससे हमारा ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है. उसके लिए आप ये ज्ञान मुद्रा लगाकर, इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं, इंडेक्स फिंगर और थम्स को ज्वाइन करेंगे हम. ज्ञान मुद्रा में बैठकर हम जो है ओम चैंटिंग करें, उससे हमारा ब्रेन जो है एक्टिवेट हो जाएगा और मेडिटेशन होगी और लर्निंग आपकी फास्ट होगी. थैंक यू शिखा मैम, आपने ये सब अरेंज. थैंक्स ऑल ऑफ यू. Thank you so much, Sushma ma'am. Ma'am has told us some very simple exercises that we can, adopt in our daily life, and these will definitely work wonders. I have already adopted some meditation and some very simple exercises as to by Sushma ma'am. You all are requested to follow her words, and you will realize that life will be wonderful very soon. Okay, so moving ahead. Good words, sweet words, and wise words. These work like medicines on our being. So, to end this remarkable, very useful, and very helpful session, I request my very experienced and very wise colleague, very senior colleague, Jogesh Gulati ma'am, to bring an end to this discourse and discussion and this session with her wise words. Gulati ma'am, please. Thank you. Good afternoon to all. Good afternoon. Once a great word. Feeling thankfulness and not expressing it, like wrapping a present and not giving it. And hence, before we draw closer to the end of today's program, would like to extend my gratitude towards all the teachers for their endless hard work, punctuality, and their sheer dedication towards the well-being of this educational institution. I would like to call out their determination in maintaining the code of conduct of this school during these unforeseen times. Thank you, teachers. Thank you. Thank you so much. All the parents are well informed about the upcoming procedure for 12th standard. I thank each and everyone who took out their valuable time to attend this session. Children, parents, we have been fortunate to be assisted by our officiating principal, Mrs. Shikha Gupta ma'am. Ma'am, you have been a constant source of support and encouragement to all of us. Thank you, madam. Now, I will request you to please close out today's session with your thoughts and good words. Thank you so much, Gulati ma'am. But I am missing your real Punjabi today. हाँ, पंजाबी ਵਿੱਚ कुछ तो कह दो. हाँ जी बिल्कुल जी, सभी आयां दा बहुत बहुत धन्यवाद जी जिन्हों ने अपना इतना कीमती समा निकालिया. पर असी सारे एक टीम वर्क, हाँ टीचर्स पेरेंट्स एक टीम वर्क बन के ही असी चलांगे. टीचर्स ने सानू इतने सारे वैल्यूएबल इनपुट्स दिते ने, उन्होंने सभी नू असी मनना है और फिर अपने बच्चों नू गाइड करना है उन्होंने अच्छे फ्यूचर दे वास्ते. सो पेरेंट्स केवल सेशन एक सेशन फॉर्मेलिटी नहीं, इसको असी लेना है बहुत सीरियसली ताकि साडे बच्चे आगे जाके फ्लरिश करन, असी भी खुश होइए, साडे बच्चे भी आगे बढ़न. थैंक यू मैम. ये हुई ना अब काम की बात. बहुत बढ़िया. अच्छा, डियर चिल्ड्रन एंड स्टूडेंट्स, एज गुलाटी मैम हैज ऑलरेडी टोल्ड यू, प्लीज डोंट टेक इट अ सेशन. This is not a session, this is your learning area, how you have to groom yourself for your board examination. This board examination is not going to happen every year. This is do and die situation for you. And at Sri Guru Nanak Public School, you all know
that our school was founded in year 1978, and we are there to provide quality education at reasonable cost. Our faculty at the senior secondary level as well as secondary level, we leave no stone unturned in bringing the good results for our children. You can always give us a challenge. A child coming up with 30% marks, we can groom him or her to 75% marks with my excellent team of mentors, the teachers who are there with us, who are associated with us. Now coming forth, every teacher talked about different aspects. We talked about sincerity, regularity. Attendance is one of the mandatory requirements of CBSE, wherein you have to give your minimum 75% attendance, children. Now, this 75% attendance is taken by CBSE from us. We have to submit our registers to CBSE, and ultimately they are taking evidences for each and every purpose, whether it is portfolio assessment, whether it is your assignment, whether those are your unit test, everything has an attachment, and CBSE is asking us to supply these evidences to them. So children, please be benefited from this particular session, because if I say I'm getting a thing in mind, by failing to prepare, you're preparing to fail. So I hope my children don't want to fail. So if you prepare today, you're never going to fail. Keep your goals smart. What are SMART goals? SMART goals are: S stands for specific, M measurable, A achievable, M is measurable, relevant, R and T is your time bound. Once you're going to have these SMART goals before you, you're going to rock not only in CBSE, but in your current life, in your future life as well. We want you to be chartered accountants. We want you to be the engineers. We want you to go ahead with your medical profession. Whatever is your dream, you should attain that. And that is only possible with consistent, regular efforts. So this is all from Team SGNPS. So all the best, children. Thank you so much. Parents, please keep a vigilant watch on your children, what they are doing, because we are teaching, but are they learning? That is the real question. So that real answer comes from you people. So thank you for sparing your valuable time. Thank you, Team SGNPS. Thank you. We end our session today.